हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मेजर दामसन और आज हमारे साथ हैं अकिराज प्रशांत, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाई किया है, आरबीआई ग्रेड बी 2022 को। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इंटरव्यू में टॉप किया है ऑल इंडिया। जिनका अगर स्कोर की बात करें हम लोग, तो इन्होंने स्कोर किया है 74 आउट ऑफ 75। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, फेज 1 की क्या स्ट्रैटेजी रही, फेज 2 की क्या स्ट्रैटेजी रही, और स्पेशली इंटरव्यू की क्या स्ट्रैटेजी रही कि इतना अच्छा मार्क्स इन्होंने अचीव किया है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अकिराज प्रशांत का आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाई करने के लिए, एंड वेलकम करना चाहूंगा अकिराज का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो सर, हेलो, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो अकिराज? हाउ आर यू? या आई एम डूइंग गुड सर, आई एम डूइंग वेल। हाउ आर यू? प्रशांत, आप मुझे अपने बारे में बताइए कुछ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? Sir, I'm basically from Andhra ओके, and Telangana. So I've done my BTech Computer Science ओके, and then integrated with MSc Economics. ओके, And from Bitspilani, sir. So though I did my MSc Economics, so I was never interested in economics. Just that I was interested in the welfare part of economics, the social side, the welfare economics angle. So my interest was in labor, female workforce, or agriculture, farmers. It was never in macro, micro, all that areas. So that was my background, sir. And I've started my UPSC preparation. ओके, So I've done it for 4 years, and after that, as a plan B, I initiated SSC and Grade B. SSC primarily, sir. ओके, And जब had time, बीच में मुझे थोड़ा time मिला प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, 3-4 महीने मिले थे, जी, तो मैंने सोचा आरबीआई के भी अटेंड कर लेता हूँ. जी, So it was not a serious attempt. Initially when I started it, ओके, तो मगर once I started it and went into the prelims, I realized this subject is much more interesting. ओके, So मैंने पढ़ना शुरू किया and it went on well. So in 1.5 months for prelims and 1 month for mains, that's all I prepared. ओके, अब वो टाइम जो इंटेंस आरबीआई के लिए प्रिपेयर हुआ था, बट जो आरबीआई एग्जाम में जो हेल्प हुआ था वो क्यूमुलेटिवली यूपीएससी में जो प्रिपेयर हो रहा था, एसएससी में जो प्रिपेयर हो रहा था, वो सब मुझे यहाँ पे यूज होगा सर, वो हुआ. जी, जी। मतलब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे थे और उससे बहुत फायदा आपको मिला आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्रैक करने स्पेशली मेंस में डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए में। मुझे वो, इट वाज नॉट ए सेपरेट प्रिपरेशन. मैंने एक ओके, भी सीरीज नहीं ज्वाइन किया. ओके, I think I scored cutoff plus 20 in ओके, mains. That's a decent score in all descriptive papers. Though I left few questions. ऐसा बोलते हैं कि किसी भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए. जी, जी, तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी सर. ओके, डे वन से मैंने ये यूपीएससी से मैंने ये सीखा है कि इट डजंट मैटर हाउ मेनी क्वेश्चन यू आंसर, डोंट लीव ए सिंगल क्वेश्चन. ये आई डोंट बिलीव इन दिस. सो जो हम लिखे हैं वो जी, अच्छा लिखना चाहिए. सो बिल्कुल, दैट्स द बिल्कुल, फंडामेंटल बिल्कुल, पॉइंट. बिल्कुल। अखिराज, व्हाट इज योर फेज 1 स्ट्रेटजी? Sir, in phase one, I think our main aim should be maximizing our score in general awareness, or I would rather say maximizing our score in our strong areas ओके, and not doing mistakes in our weak areas. ओके, ऐसा नहीं कि you keep on working on your weak areas and then and you miss out marks in the strong areas. So strong area को बहुत ज़्यादा strong करनी चाहिए. जी, जी, weak areas को it's okay. हमको पता होनी चाहिए कि किस किस क्वेश्चंस को लीव वी शुड लीव. तो जी, जी, yeah, so fundamentally sir, in Q3 areas of quant and reasoning, I think ओके, we should leave out a lot of questions. So you should know what exact areas you're weak in, so that you leave those questions, and the exact areas you're strong in, just attempt those बस. And जो हमारा main strength होनी चाहिए, I believe it's general awareness, because that's a maximum scoring area. So उस पे थोड़ा ज़्यादा हम फोकस करें तो जी, ज़्यादा फायदा होगा. जी। प्रशांत, व्हाट इज योर वीक एरियाज एंड व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग एरियाज? So my weak area was reasoning में वो जो seating arrangement था, that is I think one of the toughest reasonings among all exams. So मैंने उस पे ज़्यादा focus नहीं किया. जी, So I just attempted very few questions in reasoning and I cleared it. At my quant ठीक है, मैंने confident था, at least मैं तो clear करूँगा ही. जी, Weak area was reasoning, तो मैंने उस पे ज़्यादा focus नहीं किया because I was weak in it, I understood it, I realized it, I accepted it. जी, तो मैंने जो area तो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ reasoning में, वो मैंने कर दिया. उसमें just cut off पार कर दिया.
जी। और जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था। तो इंग्लिश में मैंने आई हैव डन माय रीजनेबली गुड। आई डोंट रिमेंबर द मार्क्स, मैंने शायद देखा भी नहीं, बिकॉज मेंस में मैंने अभी देखा है। जी। प्रीलिम्स वाज नॉट, आई डिडंट हैव दैट इंटरेस्ट इन लुकिंग एट प्रीलिम्स मार्क्स। अच्छा। सो आई थिंक सर द फंडामेंटल पॉइंट, माय स्ट्रॉन्ग एरिया इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, जी। उस पर मैंने फोकस किया। रीजनिंग मैंने टू मैक्सिमम एक्सटेंट आई लेफ्ट इट, एंड जी। क्वांट आई वाज रीजनेबली ओके विद इट। ओके। एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी फॉर जनरल अवेयरनेस? सर इन जनरल अवेयरनेस इट्स एन ओशन सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि जी। मैंने यही पढ़ा है। जी। जी। So, वो दिमाग में खिचड़ी हो जाता है। सो जी यू बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। रीड रैंडम थिंग्स एंड रिमेंबर होनी चाहिए। जी। एग्जाम में ऐसा यू जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, कुछ ना कुछ हो जाता है। जी बिल्कुल। सो आई बिलीव ऐसा यू पिक अप अ बुक एंड इट्स नॉट दैट यू बी रीड पिन टू पिन फर्स्ट पेज से लास्ट पेज, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। तो जो भी हम, लेट्स से यू पिक अप सम करंट अफेयर्स मैगजीन, करंट अफेयर्स फॉर सीजीएल इज डिफरेंट, करंट अफेयर्स फॉर आरबीआई इज डिफरेंट, करंट बिल्कुल। अफेयर्स फॉर यूपीएससी इज डिफरेंट। तो यस। मैंने विजन पढ़ लिया, और करंट अफेयर्स के लिए एंड जी। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए टैगलाइंस वगैरह वगैरह, वो जो स्टार्टिक पार्ट है, जी। बहुत सारे सोर्सेस है मार्केट में। जी। So जी। I read random stuff, sir. I made a small notes for in current affairs because I can't none of us can remember a lot of names. So मैंने एक ही जगह लिख दिया। So सारे current affairs मेरा 2 ही A4 शीट्स था। So बहुत बहुत छोटा लिखा मैंने, मगर 2 A4 शीट्स में खत्म कर लिया। So I kept revising it maybe 3-4 times before the exam. ओके। So that was the strategy for current affairs. In the static part, I believe जो बैंकिंग का करंट अफेयर्स था, और मैंने जो फाइनेंस में थोड़ा पढ़ लिया, जी। जी। because first 20 days I had 1.5 months, 40 days for prelims because I had CGL prelims. ओके। So days में मैंने 20 days फाइनेंस एंड मैनेजमेंट को दिया, और 20 days मैंने जनरल अवेयरनेस और मैथ्स क्वांट रीजनिंग को दिया। वो जो 20 days मैंने पढ़ा है फाइनेंशियल पार्ट, वो जी। मुझे आरबीआई नोटिफिकेशंस वो सब पढ़ने में, एनालाइज करने में बहुत फायदा हुआ। जी। ओके। एंड अगर हम लोग बात करें कि फेज 2 के लिए, तो फेज 2 के लिए जैसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो गया, उसके बाद फिर फाइनेंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज हैं, उसके लिए फिर क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? सर दिस ईयर पेपर वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैं डिफिकल्ट नहीं बोलता हूँ, मगर अनएक्सपेक्टेड है। जी। So saying that syllabus is a bible according to me is a mistake, because finance and management में है syllabus is the bible, because जो भी है वो पढ़ना चाहिए, वो एग्जाम में आ जाता है। You जी। just read it, you kind of retain it and you represent it in the exam. जी। तो मैनेजमेंट में ऐसा हो जाता है, and हम्म। finance also is more or less like that in objective part. जी। But sir, mains is all about descriptive. हम्म। मेंस लिखने के लिए हमको इंफॉर्मेशन के अलावा नॉलेज का जरूरत है, जी। जी। जो मैंने यूपीएससी में थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर दिया। जी। तो थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा हम जो इशू पे बात कर रहे थे, वो जी। जो आंसर में, सो वो लिखने के लिए यू नीड दैट स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी यहाँ पे भी। सो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आई जी। बिलीव। सो यूपीएससी आंसर राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ऑफ आई थिंक आरबीआई आर नॉट डिफरेंट। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करनी चाहिए। जी। सो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाज माय हम्म। स्ट्रेंथ। सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग वाज ऑलवेज माय इंटरेस्टिंग एरिया। हम्म। तो वहाँ पे आई इट वाज ओके, बट आई राइट स्लो, आई थिंक स्लो। तो थोड़ा एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। जी। उसके लिए आई लेफ्ट फ्यू क्वेश्चंस इन द मेंस, दैट वाज ओके, बिकॉज जो भी मैंने लिखा है आई रेड इट, आई हैव रिटन इट विद अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आई एम ओके, सो दैट्स इट सर। ओके। एंड आपका अगर हम लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस बोले कि टाइपिंग आपने कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ आते हुए भी नहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं टाइपिंग जी के स्पीड की वजह से, तो जी उसको मतलब किस टाइप से आपने प्रैक्टिस किया या फिर कैसे उसको हैंडल किया? सर, फ्रॉम आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे ओके। थोड़ा टाइपिंग का आदत है। अच्छा। So I didn't have a difficulty, but for people who have a difficulty, यस। I would suggest sir, you should start writing random things. जो भी लिखना है, for example, how was your day today? Just लिख दो, I woke up at so and so time. जी। Timer लिख दो, sir. If you are preparing for RBI Grade B without timer, you are doing a blunder. So जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी। if you are writing tests, ठीक है, if you are writing lot of tests, वो जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, हर रोज टेस्ट लिखते हैं, हर हफ्ते टेस्ट लिखते हैं, वो तो ठीक है। जो टेस्ट नहीं लिख पाते हैं जी। या लिखने का आदत नहीं है, तो जी। ठीक है, एटलीस्ट हैव अ टाइमर विथ यू। जी। सो स्टार्ट राइटिंग अ पैराग्राफ एंड ओके। पुट अ टाइमर वॉच, या मोबाइल में टाइमर है, जी। तो जस्ट हैव दैट टाइमर विथ यू एंड सी हाउ यू आर राइटिंग, हाउ यू आर इवन एनालाइजिंग दोस क्वेश्चंस। इवन प्रीलिम्स सर, जनरल अवेयर में इसमें जो हम
मैथ्स का प्रैक्टिस करते हैं, जी मेक श्योर दैट जो स्ट्रॉन्ग एरियाज 10 क्वेश्चंस डू इट इन 10 minutes, जी 10 questions do it in 9 minutes, finally end up in 8 minutes, again do those 10 questions in again 8 minutes. So ऐसा कुछ तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए. Without बिल्कुल. time if you're practicing there's no use. हम्म, So same thing for typing, sir. Look, you write a love letter, doesn't matter. जो लिखना है लिख दो. Write जी about your father, write about your girlfriend, write about how your day was. जी जो जी भी लिखना है लिख दो, but just write it with a timer in hand. जी. मतलब वर्ड लिमिट करके, वर्ड कितना टाइम में आप कितना वर्ड हाँ टाइप कर हाँ, पा रहे हो. तो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है. सुबह लिख दो, रात को लिख दो, then you see where it's going wrong. थोड़ा और write the same thing again. ऐसे नहीं कि सर आई कीप सेइंग इट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए या अदर लिखने के लिए बहुत ज्यादा टेस्ट लिखने का जरूरत नहीं है. एक ही टेस्ट दूसरी बार लिख दो. राइट द सेम आंसर अगेन, राइट द सेम आंसर अगेन, इट्स ओके. सो अनलेस यू रीच सेटिस्फैक्शन एंड देन से फाइन दिस इज हाउ आई एम राइटिंग. सो हमको पता होनी चाहिए व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, व्हाट इज आवर वीकनेस. इसके लिए एक ही आंसर को बार बार लिख दो, so that you will know what exactly is improving each time. बिल्कुल. ओके. एंड अखिराज, मैं आपसे सबसे जो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है, ठीक है, इंटरव्यू में, जैसे कि हमने इंटरव्यू शुरू होने से पहले बताया कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर अगर आप देखें हम लोग तो आपको मिला है, यानी टॉप किया है आपने 74 आउट ऑफ 75. तो इसका क्या राज है? सर मतलब मुझे भी आई डिडंट बिलीव इट फर्स्ट व्हेन आई गॉट 75 out of 75. जी मगर सर आई थिंक इंटरव्यू प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी. जी वो सर आई विल टेल यू फ्रैंकली, 40 से 60 कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है, थोड़ा यू पढ़ लो, 40 से 60 इंप्रूव होता है. 60 से 65 कैसे इंप्रूव करना है वो भी कह सकते हैं. जी और 65 से ऊपर कैसे जाना है, दैट इज ओनली इन द पर्सनालिटी. That you have to overall develop in your empathy, in your the way you look at things, the way you look at perspective about issues around you, about small issues around you, about women, about children, about a lot of things. वो तो है ही sir. But जी coming to the theoretical part of it, कैसे improve होना है generally marks, I believe I think you need 2-3 more angles, 2-3 more parallel threads to it. Number one is newspapers. So interview के 2 महीने पहले, yeah, at least 1.5 month before, you need to read newspapers, not for content, but to get that confidence. जी Oh, I used to read 4 newspapers, sir. Business Line, Standard, Business Standard, Financial Express, Economic Times, and make a small notes out of it, with the assumption that वो आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, like digital lending norms, how RBI is changing it, or how banks are in profits now, in spite of rupee depreciation. So profitability of banks. So जो भी articles आते हैं, interesting articles, just make a note of it, just to get that confidence. So I'll give you a small example. In my same interview day, there was a friend of he's not a he's just an acquaintance. So he was very scared of interview, sir. मतलब हर एक आदमी को पूछ रहा था कैसे हुआ इंटरव्यू. Then he was so scared. I told him, you'll do it good, don't worry, you're really great. अच्छा हो जाता है. Unfortunately उसका अच्छा नहीं हुआ है. I don't think his selection is done. So sir, if you are scared ना, हम जो भी पढ़े वो सब नहीं रिप्रेजेंट कर पाते इंटरव्यू हॉल में. So that confidence के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए. मैंने जो न्यूज़पेपर का नोट्स बना दिया, न्यूज़पेपर का क्लिपिंग्स कर दिया, I took them to Bombay to revise them. Nothing came in the interview. Nothing was asked in the interview. But they gave me a sense of confidence. Before entering into the interview hall, I had a big smile. जो भी पूछने दो मैं बोल सकता हूँ. So ये कॉन्फिडेंस के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए. Number one. और न्यूज़पेपर दैट इज द फर्स्ट थ्रेड सर. द सेकंड थ्रेड इज द कंटेंट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हम जो भी पढ़े हैं, फाइनेंस पार्ट वो तो हम रिवाइज करना ही चाहिए, स्टैटिक पार्ट. बिल्कुल. और उसके अलावा सर, डोंट लूज योर ट्रू पर्सनालिटी सर. इंटरव्यू इज नॉट, it's not an interview sir, it's a personality test. I believe interview just like UPSC. So यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, मगर if your biodata has substance that is true to the content, because I had biodata, वो तो हम 2 मिनट के बाद बोल सकते हैं sir how the interview went in detail will go. But the overall perspective, first newspapers, second is the finance, and the daily or the static part of finance. The third is about your biodata. So biodata में हम जो भी लिखे हैं, each word in the biodata is a question in the interview. So interview panel thinks they are interviewing you, but through your biodata you are actually driving the interview. So they are under assumption that they are interviewing. You are actually driving the interview through your biodata. That's what I believe. Yes, sir. This is the basic strategy sir interview में. जी जी. और प्रशांत, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे मतलब
मॉक इंटरव्यूज लगाते हैं इंटरव्यू से पहले, तो उसका क्या कितना फायदा होता है? जैसे कि आपने भी लगाया था कि गर्ग सर बता रहे थे आपके बारे में भी, Yes, तो sir. मतलब उससे कितना फायदा होता है? Sir, I gave mock interviews in several institutes because मुझे टाइम नहीं था. एक CGL मेंस के बाद in 20 days I had interview. So मैंने random interviews लगा दिया. तब मुझे पता चला कि इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज में जो suggestions देते हैं they are not always true. You just have to evaluate rationally. Except for KK Garg sir, I think most of the interview panels gave me a review saying you are speaking a lot. जब बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, थोड़ा क्रिस्प बात करो, have more precise answers and have more lucid, very crisp answers for everything. But that didn't work in the interview. In the interview, I gave very elaborate answers. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, हर एक चीज को एग्जांपल दे दिया, डिस्कशन हुआ इंटरव्यू में. I had a discussion with one of the interview panel members. So we had a one-on-one debate. The other panel members were involved. I was very confident. I was smiling. One panel member scolded me. I have, I have kind of, I agreed that it's my mistake. I'm sorry. Still, I take my stand. So nobody can humiliate you, sir. जो हम वो लोग they try to do that, but there's no point. If you're confident about it, I think nothing can help. So in mock interviews, sir, all of them gave me suggestions which didn't work in the interview. But KK Garg sir gave me a valuable suggestion. उन्होंने ये कहा कि why you getting scared? Because मुझे stammering था बहुत. अभी भी मैं in this interview you would have seen that I stammer a bit. So वो ठीक है. Sir said, why are you getting a little scared and skeptical about the interview process? They are here to recruit you. They are in need of you. So they are in need of young talent. आपको ये young talent ढूंढने के लिए वो they are going from city to city. बिल्कुल. So they are in need of you. Why are you getting scared? So they are coming to you. So that really just before entering, one step before the interview hall, sir, मुझे वो strike हुआ दिमाग में. It's okay. They are in need of me. I am like a hot cake. It's okay. So this confidence is important, sir. So mock interviews will give you that confidence, number one. And whatever suggestions are given in the mock interview, please evaluate it from your own standpoint. ऐसा नहीं कि वो लोग जो बोलते हैं वो change करने चाहिए, जरूरत नहीं है. I didn't have a lot of my colleagues and other people had so many questions, sir. ऐसा लिखना चाहिए biodata में, ऐसा लिखना चाहिए. I wrote very unconventional biodata. Capital letters लिखना चाहिए, cursive नहीं लिखना चाहिए. All that doesn't matter, sir. What is important is whatever you write in the biodata, you should be very true and honest in expressing it and be proud of it. If you're not proud of it, don't write in the biodata. Why? Who are you trying to cheat? That's it, sir. So mock interviews help us in one, confidence. Number two, correcting those little errors and thoda giving you that sense of okay, मैं अच्छा कर रहा हूँ. ये थोड़ा comfort दे देते हैं. But don't be very conscious of taking many mock interviews. They kind of, if you listen and truly implement all of the suggestions given to you, you might end up not being yourself, which is very harmful for the interview. Okay. अखिराज, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपने जब इंटरव्यू आप दे रहे थे उस टाइम, कुछ ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो? मतलब इंटरव्यू में सर, फाइनल इंटरव्यू जब आपका हुआ था उस टाइम आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? Sir, my interview went on for 25 plus minutes. So it was a great time. We had fun, I can say, the interview panel. So the interview panel was interested in having conversation with me. वो तो मुझे पता चला. After, for example, I'll just say in fast 2-3 instances, sir. एक तो I did you were into welfare part, then you were into graduation, then you did marketing, then you did NGO. अभी तुम यहाँ पे हो. Financial economics. Do you have any clarity in life? Do you know what you want? तुम बहुत useless, you're moving around. That's what was told to me. So I said, sir, this is the age to experiment. If not now, when? बिल्कुल. मैं जब if I come to your age, I cannot experiment. जब मैं 30 क्रॉस हो जाता हूँ, experiment घर में नहीं allow करते हैं. So let's be frank about it. उसमें छुपाने की क्या बात है? बिल्कुल सही बात है. So this is one instance, sir. So कुछ sir, nobody can humiliate us. जो questions पूछते हैं, if you have honest replies, if you have done things sincerely in your life, how can anybody humiliate you? वो होता ही नहीं है, sir, according to me. Secondly, there was one instance where, sir, if you have done a mistake, first apologize. That's what I believe.
like Mahatma Gandhi says, being sorry is the bravest thing you can ever do. So in the middle of interview, the chairman has actually scolded me. He said, never ever use acronyms in the interview or anywhere, even if you go to global levels, never ever use acronyms. I used the word Dwakra. So he got a little offended. Matlab, I didn't explain it. मैं actually कर रहा था, but he didn't wait. It's okay. It's really okay. I said, I'm sorry, sir. मैं थोड़ा I should have explained it, but Dwakra means so and so thing, development of women and children in rural areas and all that. So मैं कुछ बोल रहा था. So if you have done a mistake, be apologetic towards it and agree to it. No problem. And उसके अलावा sir, I think overall I can say one thing. There will be general questions, sir. For example, what are the problems of Indian economy? Or मुझे जो कुछ पूछे गए थे, SWOT analysis of Indian economy, threats of Indian economy. So बहुत सारे बोल सकते थे. We can say unemployment, we can say agriculture, we can say industry, we can say demographic dividend, anything we can say. But जो हम confident है, वही बोलना चाहिए. जी बिल्कुल. So, it's not about what Indian economy is suffering from. It's about what you can confidently defend about. So मैंने immediately I said Indian economy because that's my strength. Then I said demographic dividend because I worked in rural workforce. I have done some research about it. So I have chosen only those answers because I am strong in it. So ये बोलने का मकसद ये है कि whatever word you're using in your interview, जो word मुंह से आ रहा है बाहर, जी जो आप बता रहे हो उस पे आप कॉन्फिडेंट रहो. Yes, sir. You should be very careful in choosing the words that come out of your mouth. क्योंकि एक वर्ड से ही आप दूसरा क्वेश्चन भी निकलता है. Exactly, sir. So by mistake, if you just say something, like one of my very close friends, sir, very unfortunately, he couldn't clear it. I feel bad about it because he guided me with his inspiration. I started grade B. He was the first person I met. Magar in the interview, they asked him, what do you, he worked just for 2-3 months in, I think artificial intelligence or data science. He worked in data science. So they asked him, he should have hidden it because he is not confident about it. But लिख दिया उन्होंने, वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया. Then they went into depth about it. So by mistake he said data science वगैरह वगैरह, and he could not defend himself to an extent that he felt bad. Interview नहीं हुआ अच्छा. So if you are not confident about it, if you are not honest about it, let's not write it in the biodata. And if you write it in the biodata, let's not emphasize it more in the interview much. So be honest. That's all I can say. जो भी tactics you use कर लो, मगर they are smart. The interview panel is not dumb. Yeah. थैंक यू प्रशांत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और थैंक यू आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया. और आई होप जो आपने बताया है हमें, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं आने वाले, वो इंस्पायर होंगे आपसे मोटिवेट होंगे, और आपने जो बताया कि ये गलती नहीं करनी है वो इस पे ध्यान देंगे और उनको भी सफलता मिलेगी जरूर. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.